Hi, this is Dr. Rajkumari Soni and welcome to my course on finance for non-finance professionals. This is the very first video of the course, that is the building blocks of accounting. So we are going to talk about accounting and finance. Accounting and finance, these two terms are often used interchangeably. But we are going to talk about two completely different terms, that is accounting and finance. So first lecture में हम लोग बात करेंगे what is accounting, what are the role and functions of accounting and what is the building blocks of accounting. Second lecture में हम लोग बात करेंगे what is finance, what are the role and functions of finance and what is the building blocks of finance. And based on these two lectures, we will understand the difference between accounting and finance and how these two terms are completely different. So let us start with what is accounting. But before that, let me share one incident with you. When I was doing my MBA, in first semester I learned the subject accounting और सेकेंड सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट. प्रोफेसर एंटर्ड द रूम, उनके हाथ में काफ़ी सारे बुक्स, चॉक और डस्टर था. उन्होंने उसको टेबल पे रखा एंड देन ही आस्क्ड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी तरीके से आंसर किया बट प्रोफेसर वॉज नॉट हैप्पी, रादर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ द आंसर. देन वॉट ही डिड, उन्होंने चौक उठाया, बोर्ड पे जाके उन्होंने 100 रुपीज़ का नोट ड्रॉ किया एंड बोला कि दिस इज वॉट 100 रुपीज़ इन अकाउंटिंग. देन उन्होंने अपनी पॉकेट से 100 रुपीज़ का नोट निकाला और बताया और बोला दिस इज वॉट द 100 रुपीज़ इन फाइनेंस. ये डिफरेंस सुनते ही सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे. बट जैसे जैसे फिर वो सब्जेक्ट हम लोग ड्यूरिंग द सेमेस्टर पढ़ते गए, वी स्टार्ट टू रियलाइज दैट वॉज रियली ट्रू. In accounting, the money is which is recorded in the books of account, and in finance, the money is which actually we have in the form of cash. So this is how I started my journey of learning the difference between accounting and finance. Let us start your journey to understand the difference between accounting and finance, and let us start with what is accounting. So accounting is about tracking of money. Accounting is about recording of financial transactions and preparing of financial statements, and accounting is also about making sure that whatever financial transactions are recorded, they are recorded accurately. So what is tracking of money? The main function of accounting ये है कि business के जितने भी transaction होते हैं उनका complete and systematic record रखा जाए. In tracking of money, accounting keep the track of money, that पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, what are the sources of money and how this money is used. इस प्रकार बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सभी का ट्रैक रखा जाता है and this is called tracking of money. The second function of accounting is recording of financial transactions and preparing of financial statement. बट उसके पहले कुछ अकाउंटिंग बेसिक्स को समझ लेते हैं. अकाउंटिंग इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. सो ट्रांजैक्शंस विच आर ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी बिजनेस में हो गए हैं सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग यहाँ पर अकाउंटिंग में किया जाता है. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. This concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of account. For example, sale of goods, payment of salary, etc. So ये सभी transactions को हम लोग monetary term में express कर सकते हैं. So ये सभी transactions को हम लोग books of account में record कर सकते हैं. But there are few transactions which do not involve money और वो transactions को हम लोग books of account में record नहीं कर सकते हैं. For example, working condition in the workplace, skills of employee, the efficiency of the management, etc. will not be recorded in the books of account as they cannot be expressed in terms of money. So only those transactions are recorded which are in the monetary term. Next is accounting is based on double entry accounting system. बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, जिसमें से एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. जैसे अगर बिजनेस में कोई मशीनरी अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट जो होगा वो उतनी अमाउंट से बढ़ जाता है और जो कैश अकाउंट होगा वो उतनी ही अमाउंट से यहाँ पर कम हो जाता है.
इस तरह डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंड जितनी अमाउंट से एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है उतनी ही अमाउंट से उसके कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। सो ये जो ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग का तरीका है उसको डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर दूसरे भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं फॉर योर काइंड रेफरेंस। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अक्रूअल प्रिंसिपल। सो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अकर्ड रादर देन अवेटिंग पेमेंट। सो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं तो वो जब भी हो रहे हैं इमीडिएटली हम लोग वो ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर द पेमेंट। So in case of income, we record all the income transactions when your transaction take place with or without the transfer of money. Same in case of expenses, we record all the expenses when you are billed with or without the payment of money. So in accounting, all the transactions are recorded on accrual principle. It means whether the payment has been received or not, or whether the payment has been made or not, you record those particular transaction, जिसको बोलते हैं accrual principle. Accounting is based on principles and rules. Whenever in business we record the transactions, we follow some principles that is generally accepted accounting principles. और ये principles के base पे ही जितने भी transactions business में होते हैं उसका recording किया जाता है. And after recording, whatever financial statements are prepared, it is prepared based on accounting standard. So accounting is based on some principles and rules. Now let us understand what is recording of financial transactions and preparing of financial statements. So for that, there is a process which is followed in the businesses. So there are financial transactions, उसके supporting vouchers, invoice या bills available होते हैं businesses में. Based on these financial transactions, they will pass journal entries using the double entry accounting system. After journal entries, they will prepare ledger and posting. Ledger posting के base पे there is a preparation of trial balance और trial balance बनाने के बाद they will prepare these 4 important financial statements, that is balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and statement of shareholders equity. So from financial transactions to preparation of these 4 financial statements, ये पूरा एक accounting का process होता है. And by following this process, all the transactions are recorded and these financial statements are prepared. Traditionally, all these financial transactions were recorded manually. But now the accounting softwares are available, and with the help of these accounting softwares, now it is very much easy to maintain and record the financial transaction. Here few names are given which are best accounting softwares in India. Tally, QuickBook, Busy Accounting, Vyapar, Saral, Logic, Profit Books, MyBooks, Zoho Books. So these are the few names which are considered as best accounting softwares in India in order to record the financial transactions and for preparing the financial statements. So this is how the recording of financial transactions and preparing of financial statement is done. Now the third function of accounting is making sure that whatever transactions are recorded, it is recorded accurately. For that, we are going to use this accounting equation, which is the building blocks of accounting. And this accounting equation is assets equal to liability plus equity. ये जो equation है वो balance sheet का equation है. Balance sheet is one of the 4 financial statement. Traditionally, balance sheet was prepared by using 2 sides, that is left hand side and right hand side. But nowadays, companies are using straight line format in order to prepare the financial statement, जिसको हम लोग common format बोलते हैं. But to understand this accounting equation, we are going to use the traditional format of balance sheet, that is left hand side and right hand side. So our accounting equation is assets equal to liability plus equity. Asset means what I have, liability means what I owe, and equity means what I own. It means in accounting equation, asset means what I have, liability means what I owe, and equity means what I own.
सो अगर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, इट मीन्स व्हाट आई हैव इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट आई ओ प्लस व्हाट आई ओन. Let me give you a simple example to understand this accounting equation in a more better way. Now suppose I have a car and this car worth rupees 25 lakhs. To buy this car which is worth rupees 25 lakhs, I have paid 10 lakh rupees जो मेरे पास खुद का पैसा था. So वो 10 lakh rupees मैंने ये कार खरीदने के लिए पे किया है. जो रिमेनिंग 15 लाख रुपए है that I have borrowed from the bank. So, in order to purchase the car worth rupees 25 lakhs, मैंने खुद का जो पैसा यहाँ पर दिया है it is 10 lakh rupees and 15 lakh rupees I have borrowed from the bank. So, जो मैंने खुद का पैसा लगाया है उसको हम लोग बोलेंगे it is equity. It means what I own. So, I have paid 10 lakh rupees and I own 10 lakh rupees of equity. Remaining 15 lakh rupees I have borrowed from the bank. It means it is my liability, what I owe. And the asset which I have, it is car, that is worth rupees 25 lakhs. So what I have is asset, what I own is equity, and what I owe is liability. So asset equal to liability plus equity. So asset worth rupees 25 lakh rupees, what I have, liability what I owe, the amount which I have borrowed from the bank, it is 15 lakh rupees, and equity what I own, मैंने जो खुद का पैसा ये कार खरीदने के लिए दिया है, it is 10 lakh rupees. So here with the help of this example you can understand that whatever asset I am having, वो asset खरीदने के लिए जो मैंने खुद का पैसा दिया है उसको हम लोग इक्विटी बोलेंगे, और जो पैसा मैंने बैंक से बोरो किया है इट इज माय लायबिलिटी. सो एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी. सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बिजनेसेस. Whatever assets businesses are having, in order to finance this asset, how much amount the company has contributed as their owner's equity and how much amount they have borrowed from the market. So हमेशा बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है दैट इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, वो हमेशा मैच होता है. और अगर बैलेंस शीट का बैलेंस मैच हो रहा है इट मीन्स वॉट एवर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली. एंड दैट इज वाई ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज दिस विल हेल्प द कंपनी टू चेक whatever transactions are recorded, it is recorded accurately. So we have discussed what is accounting. So accounting is all about tracking of money. Accounting is about recording of financial transactions and preparing of financial statements. And accounting is about making sure that whatever financial transactions are recorded, it is recorded accurately by using the accounting equation, that is assets equal to liability plus equity, and it is the building blocks of accounting. So this is all about the building blocks of accounting. Next video में हम लोग बात करेंगे the building blocks of finance and what is the difference between accounting and finance. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें. अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं then please subscribe to my channel. You can click on the bell icon to get the notification about my new video uploads. So मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, stay safe, stay connected. This is Dr. Rajkumari Soni. Thank you for watching.